हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए अननोन एंड पावरफुल फैक्ट्स अबाउट आईएसआई का रिएक्शन। एंड जो है आईएसआई के बारे में ऐसे मतलब कह सकते हो जितना हमें पता है वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या तो फिर मूवीज़ के थ्रू पता है। बिकॉज न्यूज़ चैनल्स में हमने देखा हुआ है कि वो बताते हैं कि आईएसआई ने ये प्लानिंग की, वो प्लानिंग की। हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल में तो यही चलता रहता है। और दूसरा जो है एक और चीज़ हमने देखा हुआ है वो ये देखा कि मूवीज़ में देखा हुआ है कि भाई इंडिया की रॉ एजेंसी वर्सेज पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी, और वहाँ पे टाइगर जिंदा है में देखा हुआ है कि भाई रॉ की तरफ से सलमान खान गए, आईएसआई की तरफ से कैटरीना कैफ आई, दोनों को प्यार हो गया। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। अब बाकी देखते हैं या फिर रियल में फैक्ट्स क्या है वो चीज़ जरूर देखते हैं। और आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो मतलब ये बेसिकली यही करती है, सीक्रेट मतलब बेसिकली मिशंस होते हैं वो कंप्लीट करती है। और ये बेसिकली देखती है कि जो हमारा नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी है वो ठीक चल रही है सब कुछ। और बेसिकली मिशंस टाइप करती है, सीक्रेट मिशंस टाइप करती है। और आर्मी से तो ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा ही होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि यार जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी एक, जहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना टफ ट्रेनिंग दी जाती है, और शायद इसमें भी बहुत ही ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दी जाती होगी। जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है उससे डबल ट्रिपल ट्रेनिंग दी जाती होगी। और तभी यार ये लोग इतने बड़े एजेंसीज में शामिल होते हैं। और इनकी ट्रेनिंग मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। ये लोग फिजिकली भी फिट होने चाहिए और मेंटली भी ये लोग बहुत ज़्यादा शार्प होने चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है इन लोगों का दिमाग ना हम लोगों के नॉर्मल दिमाग से भी तेज चलता है। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसे होने वाली है। भाई तो काफी एक्साइटेड हूँ, मैं देखने देते हैं। आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। Growing population, and to protect the best interests of this growing nation, the best of the best when it comes to the military is needed. Welcome back to FTD Facts. My name is Leroy Kenton, and this episode's all about bringing you 10 surprising and interesting facts about the ISI. So let's just jump into the facts. First thing you gotta know about the Inter-Service Intelligence Agency, or the ISI as it's commonly known as, was formed on January 1st, 1948, and it consists primarily of serving military officers drawn from the three service branches of the Pakistan Armed Forces, the Army, the Air Force, and the Navy, and hence the name Inter-Service Intelligence Agency, because they operate inter-service. I don't think I have to explain that again. However, this agency also recruits many civilians. Now, did you know that it is the largest intelligence agency in the world? Apparently, they have over 10,000 agents in the field worldwide. However, it is one of the least funded agencies in the world. It is above all laws in its home country of Pakistan, and it's often referred to as a state within a state because its policies are made outside of all other institutions, with the exception of the army. Now, its personnel have never been caught on camera, which allows them to keep their identities secret, and the agents can safely carry out their jobs. It's also been listed as the best intelligence agency. The American Crime News declared Pakistan's Inter-Service Intelligence Agency to be the world's best and strongest intelligence agency, and this was back in the year 2011. The ISI has its headquarters in Islamabad, Pakistan, and its main aim is to maintain and protect Pakistan's national interests, to look into matters of political and social interest to Pakistan, as well as to advise the military as to what are the best steps to take. Over the years, they have stopped many attacks before they could even take place and have saved thousands of lives. Also, a huge accomplishment is that no ISI agents to this date have ever been caught or have been turned. Although it has never been verified, though, the Pakistani government has not yet taken responsibility for any alleged undercover agent that was caught on foreign soil. There are stories of officials like squadron leader Khalid Khawaji that were arrested on Pakistani soil for conspiracy against the state, but it seems that the ISI have been particularly good at insulating themselves from any direct involvement in any of the covert operations that they have supposedly orchestrated. Now, if this is true, that's very impressive. Now let's talk more about their thousands of agents that they have. Now, there doesn't seem to be any verified count of the number of agents that work in relation with the ISI, both directly or indirectly. Now, what is known is that the ISI does recruit from the Pakistani military force as well as civilians, and they go through rigorous training. The training seems to be so secretive that there's very little information and details about it. What you can tell for certain is that the agents are trained in covert intelligence gathering and counterintelligence that they actually receive from all around the world, including the United States. For their headquarters, that's located in
पता ही नहीं Pakistan's है। capital of Islamabad. And now the complex consists of various low-rise buildings separated by lawns बहुत and सही है यार ये fountains. तो। Declan Walsh of the Guardian newspaper, he said that the entrance is subtly discreet, no sign, just a plainclothes officer holding a pistol, as well as they have soldiers that have sniffer dogs. And Walsh also said that the complex resembles a well-funded private university, and that the buildings are neatly tended, and the lawns are smooth, and Wow. the fountains are tinkling. And he described the central building, which houses the Director General's office on the top floor, as a modern structure with a round echoing lobby. Those were his exact words that I quoted. सही है Now यार। let's talk about Operation Tupac next. It has nothing to do with the rapper, by the way. But Operation Tupac was the name of a three-part operation that was designed to secretly support the militants of Kashmir. Now, it was partly started by the President Zia-ul-Haq in the year 1988, and the name comes from Tupac Amaru II, the 18th century prince who led the War of Liberation in Peru against the Spanish rule. Wow, The yeah. ISI is currently engaged in covertly supporting the Kashmir militants in their fight against the Indian authorities in Kashmir, and the militants in Kashmir are fighting to be independent from India and become part of Pakistan. Another notable event in the ISI history is the Kargil War. The Kargil War of 1999 is nothing short of a Hollywood war film. Like, seriously, the line of control between India and Pakistan is one of the most inhospitable places on the planet, not only because of the political tensions that sometimes comes up between these two countries, but also because it gets unbearably cold in the winter time. There is an unwritten agreement that during the winters, neither force will occupy the border's post. The ISI, however, broke this agreement in winter of 1998 to 1999, which led to the Kargil War in the following summer. Although it's reported that Pakistan did lose the war, it is considered a victory for the ISI as it caught the Research and Analysis Wing, which is the Indian counterpart agency, completely off guard. India had no clue about the infiltration until a shepherd informed them about unknown strangers occupying Indian posts. This is, of course, all reported from the perspective of Pakistan. Now let's बट talk ये about मेनली the ISI interest से ज़्यादा in मिलिट्री का Hindus सुना as था, मैंने मिलिट्री spies. नहीं किया था। हाँ, India and और Pakistan were इंडिया, divided हाँ। based on religious grounds in the year of 1947, where India had a Hindu majority and Pakistan had a Muslim majority. So it only made sense that Pakistani ISI would use Indian Muslims as spies, since they looked exactly alike and they spoke the language very well. That way they could blend in easily in India and they would be able to gather information. But in recent years, however, the ISI has turned to high caste Hindus, and those are the real attraction for them since India has become wise with their tactics. And finally, the last thing I want to share is about their nuclear tests. Although it has never been proven for sure, there is a rumor that the Indian Research and Analysis Wing, as well as Israeli Mossad, flew over Pakistan's nuclear test facilities in order to gather information. But they were unable to do so because the ISI planned to keep its nuclear facility secret and even change the location of its test sites multiple times just so that nobody would know exactly where it is. Now, they finally settled on the Pakistani city of Chagi and ensured the security of their nuclear equipment by guarding the transport plane with 6 F-16 fighter jets. इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे बहुत सारे नए नए फैक्ट्स पता लगे। लाइक ISI जो है वो सबसे बड़ी एजेंसी है और मैंने सर्च भी किया तो देखा कि हाँ भाई है, और एक्चुअली देखा जाए तो लाइक CIA इन सबसे ऊपर आती है। लेकिन आप कैसे तो प्रोमिनेंट और एक बहुत नामी गिरामी एजेंसी के नाम पे तो CIA आएगी अमेरिका की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए पाकिस्तान के पास, क्योंकि 10,000 लोग वो जो बता रहे थे कि इतने लोग काम करते हैं। एंड लाइक ये वीडियो भी शायद 2-3 साल पुरानी, तो अब पता नहीं क्या सिस्टम होगा, कैसा होगा और अब किस रैंक पे होगी, तो वो आप लोग ज़रूर बताएगा। एंड जो था कि लिस्ट तरीके बताया कि लाइक पूरा वो सेफ गार्ड करने का पूरा तरीका करती है और हर तरीके से करते हैं। लाइक कारगिल वॉर की जो बात की गई थी, कारगिल वॉर का जितना हमें पता है वो ये था कि लाइक परवेज मुशर्रफ ने किया था, तो लाइक वो मिलिट्री का एक्शन था, वो बजाय इसके ISI का इंटेलिजेंस एजेंसी का एक्शन होना। ऑफकोर्स वो मिक्स होगा, दोनों का बात होगी, इसकी बात हुई होगी, लेकिन बाकी जो अंदर की बातें हैं वो तो अब अंदर वो ही जानते होंगे। तो बाकी ये वीडियो देख के काफ़ी चीज़ें नहीं पता लगी। और मैं मतलब कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि ISI में सबसे मतलब ऐसे स्मार्ट लोग मतलब आते हैं, तो मतलब मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ कह लिया था कि इन लोगों को जो भी ऐड होते होएगा इसमें, उनका नॉर्मली लोगों से ज़्यादा ही दिमाग चलता होएगा, मैंने बता रखा था पहले। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि इसकी जो ट्रेनिंग है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कैसी ट्रेनिंग होती है, तो हम लोग ये भी कुछ लगा नहीं सकते अपना दिमाग कि कैसी एक्चुअल में ट्रेनिंग होती होगी। और क्योंकि जो हमने पहली वीडियो देखी थी एक उसमें दिखाया था कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना
डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे मतलब कि लोग इतना काम करते रहते हैं और फिर भी उनकी एट द एंड अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है कुछ कुछ लोगों का, तो इसमें कोई आइडिया नहीं है क्या होता है। फिर दूसरा एक चीज़ इन्होंने कश्मीर वाली बताई थी, वो हम सबको ही पता है कि वो मिलिट्री का ही हाथ था उसमें, तो ISI का कोई रोल नहीं था। और इन्होंने ये भी कहा था कि ये मतलब कि अगर ऐसे पता लगता है तो ये निकाल देते। तो सारी चीज़ें ये जो थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी, और यार ऐसी चीज़ों से ना हमारी जो नॉलेज है वो ही गेन होती है। तो ओवरऑल वीडियो की बात करें तो मुझे वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। वही, और साथ में जो ये पॉइंट भी था कि भाई किस तरीके से कोई भी आज तक ISI का बंदा जो पकड़ा नहीं गया है, वो नहीं गया है, वो तो अब ऑफकोर्स छुपा गया होगा। एंड साथ में मेनली चीज़ ये भी है कि लाइक हमने टाइगर जिंदा है मूवी में तो देखा था, वो तो पकड़े गए थे, तो लाइक कटरीना कैफ जो थी वो आ गई थी इंडिया हमारे साथ सलमान खान के साथ। बाकी जोक्स अपार्ट ये है, तो अंदर की बातें तो ऑफकोर्स ये इतनी तगड़ी एजेंसी है तो ऑफकोर्स इन लोग अपने जो एजेंट्स हैं उनका भी पूरा ध्यान रखती होगी। एंड किस तरीके से बाकी यही है कि ज़्यादा काम जो हो वो अमन के लिए काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप एक मुझे ज़रूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।